बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद बिन इकबाल ऑफिशियल चैनल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जो सिलसिला शुरू किया है बुक का, और इसी में हमने क्लास 4 जनरल साइंस शुरू किया है, जिसमें एक पार्ट ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 यूनिट नंबर 2 इकोसिस्टम पढ़ेंगे। चले आइए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? ऑप्शन ए, सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स। ऑप्शन सी, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी, collection of abiotic and biotic components in the area. Option D, collection of abiotic and biotic components. Question number 2, all the biotic components are option C, living things. In abiotic components of the environment is option A, plants, option B, animal, option C, water, option D, microorganism, option C, water. Food chain, option A, begin to produce, option B, begins to consumer, option C, begin at the decomposers, option D, ends at producers, option A, begin at producers. For conservation of ecosystem, option A, forests are being cut, option B, roads are being built, option C, trees plantation is being done, option D, factories are being installed, option C, trees plantation is being done. Fungus is an example of option A, producers, option B, consumers, option C, decomposers, option D, none of them, option A, producer. Everything in and out which can affected our lives is called option A, weather, option B, environment, option C, area, option D, none of these. ऑप्शन बी, इन्वायरमेंट सही ऑप्शन है। अवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें मुश्तमिल हैं? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी, ए एंड बी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एनी लिविंग थिंग्स इज नोन एज ऑटोट्रॉफी, option B, biotic, option C, abiotic, option D, none of these, option C, abiotic. The abiotic components of an environment are option A, soil, option B, temperature, option C, air, option D, all of these, option D, all of these. In example of abiotic in nature, option A, precipitations, option B, sunlight, option C, mineral, option D, all of these, option D, all of these. It is not abiotic components in the environment. Option A, plants, option B, air, option C, water, option D, sunlight, option A, plants. Which of the following is biotic components of ecosystem? Option A, water, option B, air, option C, fire, option D, plants, option D, plants सही ऑप्शन है। सनलाइट इज abiotic components of the environment like option A, temperature, option B, herbivorous, option C, plants, option D, mammals, option A, temperatures.
Which of the following is the living components of environment? Option A, table. Option B, plants. Option C, pen. Option D, all of these. Option B, plants. Which of the following is non-living components of environment? Option A, hen. Option B, plants. Option C, sunlight. Option D, birds. Non-living components. Option C, sunlight. Plants make their own food by photosynthesis. They are known as option A, consumer. Option B, decomposers. Option C, producers. Option D, none of these. Option C, producers. Aquatic plants, for example lotus, algae, are also option A, consumer. Option B, decomposers. Option C, producers. Option D, none of these. Option C, producers. Thank you for watching.